Hello, dear students. You know very well that we have been doing a doll's house detailed summary of this play written by Henrik Ibsen. Today we shall discuss the summary part number 3 of Act 2nd. Up to now we have seen that Nora is extremely feeling baffled. She is disturbed, she is perturbed, not knowing what to do because Krogstad had threatened her to disclose the matter, to disclose the forgery that she did by signing her father's signature on the bond and taking the loan without telling her own husband. Although we know that she took that loan from Krogstad for the sake of her husband, for the sake of her husband's health. So, in fact, she sacrificed herself for her own husband. We also came to know that Krogstad was to be dismissed from the bank by Torvald Helmer. And therefore Krogstad had approached to Nora to recommend for him to Helmer so that he could be kept in the bank. But it was now clear that Helmer has totally refused this request of Nora, and he said that he is going to dismiss Krogstad because he is not a man of morality, he is not a man of good manners, as he treats Helmer with light manners, just like a friend or in an informal way, even in the bank. So Helmer is now going to give the appointment to Mrs. Linde in the bank in place of Krogstad. So this is what we have seen. Now we see that as Helmer has totally refused and he was going to his study with the papers, and we also know that those papers are of the dismissal of Krogstad, and he has sent those papers through his maid servant to Krogstad. So now Nora is absolutely baffled, not knowing what to do. She thinks, what will happen when Krogstad would be dismissed and he would disclose her act of forgery? So she fears that everything will now come into the knowledge, come into the light, in the knowledge of her own husband. So she is perturbed. At that moment, Dr. Ranks come there and she stops him from going into the room of Helmer. Helmer informs her that something ugly is going to happen with him very soon. Here, not the Helmer, but Dr. Rank. Dr. Rank is informing, just a minute. So Dr. Rank is informing Nora that something ugly is going to happen with him very soon. So we, in our previous lecture or in the story, we also came to know that Dr. Rank is suffering from a kind of disease, and that is the
consumption of spinal cord, and that he got from his own father, who used to be immoral in his youth. So that was the penalty for the sins that were done by his father in his youth. So here Nora fears listening to so when Dr. Eng says that something wrong going to happen in his life. So she asks if it is about her because she fears that Dr. Rank may be also come into the knowledge of her forgery, and he may be talking about that. But in fact, Dr. Rank is not talking about all that. So Dr. Rank says that it's not about her, but it is totally about himself, and therefore Nora takes a sigh or heaves a sign of relief. That she takes a sigh of relief. She feels comfort. Then Dr. Eng says that he is in ill health and very soon he is going to die. अब नाउ मैंने अभी पहले क्लियर कर दिया कि डॉक्टर रैंक को जो डिजीज है दैट इज ऑफ द स्पाइनल कंजम्पशन, एंड वो ही हैज़ गॉट दैट डिजीज फ्रॉम his own father. He says that he has to suffer the penalty for the sins committed by his father when he was young, and that is the spinal consumption is inherited by his father. And why that kind of disease developed in his father? That was because of the continuous use of certain foods and wines that damaged tremendously his constitution, his body, his intestine, his physique. Then we also come to know that Dr. Rank is jealous of Nora's friendship with Mrs. Linde, because Dr. Rank and Mrs. Linde had been in relationship earlier in their life. But Nora doesn't know this fact. Therefore, Dr. Rank is jealous because Mrs. Linde is always there at Nora's house. So he feels jealous कि why she should be there. So when Nora says that death will not take him away from them, Dr. Rank says no, death will definitely take him away from them, and very soon they all will forget him after his death and will form new attachment, new relationships, and everyone will forget him, because this happens with everyone who dies. So he is very soon forgotten. But Nora says that no, it won't happen. So they will remember him and he is not going to die at all. But Rank says that Nora has already started to make new friends who will take his place in this house. So here it is the signal entirely to Mrs. Linde. Dr. Rank is pointing towards Mrs. Linde, who is taking his place in that house. So Nora says that he is jealous of Mrs. Linde. Dr. Rank says that yes, he is jealous of her because she will take his place in this house after his death. So Nora fears that, tells Dr. Rank to speak slowly, because we know that Mrs. Linde was already there in that house and she was in another room and she was mending the fancy dress of Nora. So Nora fears that she might not hear what Dr. Rank is speaking there. So he tells Dr. Rank that please speak slowly so that Linde may not hear, because she is sitting in another room. Nora then says that in the party or in the Christmas day or in the eve, she will wear her new fancy dress and will also dance to please Dr. Rank as well as to Torvald Hammer.
So in this way, she tries to divert the attention or change the topic. Then Nora shows her stockings to Dr. Rank. Dr. Rank also comments on that these stockings are not covering her legs properly. So on that remark, Nora joyously, joyously or in a fun, hit him lightly on his ears by saying that this is the punishment for his remarks. That is, that is, his remarks were of just like इसको अपन कहते हैं छेड़छाड़ करने वाले रिमार्क्स डॉक्टर रैंक के थे, और नोरा ने भी उन रिमार्क्स को बुरे रूप में नहीं लिया बल्कि स्लाइटली लिया, और उसने भी उसी मजाक वे में जो है कि उन स्टॉकिंग से जो है कि उसके कान के ऊपर मारा स्लॉली, और ये कहा कि तुम ये गलत जो बोल रहे हो, रिमार्क्स कर रहे हो, उसके उसमें ये पनिशमेंट तुम्हें है। इस तरह से नोरा क्या है कि नोरा इज ट्राइंग टू शो द इंटीमेसी विच डेवलप्ड बिटवीन देम, between Dr. Rank and her. So here we have this information that Dr. Rank is moving, or we can say is following Nora, and Dr. Rank is in fact in love with Nora, and Nora is also feeling the same. They both of them are coming close to each other. So then Dr. Rank asked her to allow him to have a look on her nice things. So again Dr. Rank, because now he feels a little liberty to comment in this way and to speak in this way, because both of them are now very close to each other. So he spoke that let him have a look on her nice things, and here nice things means about the undergarments of Nora that he says, and therefore she calls him naughty. So this is, we see that this is the intimacy between them that developed during that period. Now Nora is trying to test Dr. Rank's friendship for her, whether Dr. Rank really has some attachment towards her, has some closeness or love for her. So she wants a big pair. She tells Dr. Rank, वो Dr. Rank को ये कहती है कि उसका एक काम जो है कि उसे करना पड़ेगा, and she doesn't, लेकिन वो easily उस काम को नहीं बताती है। डॉक्टर रैंक बार बार रिक्वेस्ट करता है कि शी शुड से, कि बताना चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाट द फेवर शी डिमांड्स फ्रॉम हिम, कि व्हाट ही कैन डू फॉर हर। लेकिन नोरा कहती है कि वो उसको नहीं कह सकती, क्योंकि दैट इज़ वेरी अनरीजनेबल, क्योंकि वो अनरीजनेबल है, इसलिए उसको नहीं बता सकती। तो यहाँ देखने वाली बात है कि नोरा ऐसी क्या बात डॉक्टर रैंक से शेयर करना चाहती है ना, और वो डर भी रही है, उसको बता भी नहीं पा रही है। फिर वो कहती है कि वो कुछ एडवाइस चाहती है, उसकी हेल्प चाहती है कि वो कुछ उसके लिए कुछ करे, और वो ये भी कहती है कि उसका डॉक्टर रैंक में कंप्लीट फेथ है, शी ट्रस्ट्स इन हिम देन इन एनी वन एल्स, किसी अन्य के बजाय वो जो है कि उसमें ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इसलिए वो उसको कह रही है कि जो है कि कुछ जो है उसकी वो मदद करे। So this is how we see. Now we see कि जो डॉक्टर रैंक है, जिसका हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन दोनों में फेमिलियरिटी है, और वो दोनों किस तरह से मजाक वगैरह जो है शेयर कर रहे हैं, नज़दीक आने के जो है कि उनके वो फीचर्स सामने आ रहे हैं। अब यहाँ डॉक्टर रैंक अब
नोरा के प्रति जो प्रेम है उसका, उसको कन्फेस करता है। और जैसे ही नोरा एग्री हो जाती है डॉक्टर रैंक को कहने के लिए कि वो क्या मदद चाहती है, तो वो कहती है कि शी वांट्स हर हेल्प टू प्रिवेंट ए सर्टन डेंजर फ्रॉम बी फॉलिंग हर, कि उसके ऊपर कुछ डेंजर आ रहा है उसको रोकने की वो मदद चाहती है। वो ये भी कहती है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो उसको बहुत डीपली लव करते हैं, डिवोटेडली करते हैं, यहाँ तक कि वो अपना जीवन उसके लिए जो है कि न्योछावर करने को तैयार है। तो डॉक्टर रैंक कहता है कि उसके हस्बैंड इज़ द ओनली वन हु कैन गिव हिज लाइफ फॉर हर, कि क्या केवल उसके हस्बैंड ही है जो उसके लिए मरने को तैयार है, न्योछावर है। वो कहता है कि ही कैन ऑल्सो डू दैट, वो भी उसके लिए अगर वो कुछ कहे तो वो भी ऐसा करने को तैयार है। ही वॉन्टेड टू टेल दिस बिफोर हिज डेथ, इसलिए वो ये सब करने के लिए जो है कि अपनी मृत्यु से पहले सब कुछ करना चाहता है। तो इस प्रकार से उसको एक ये अपॉर्चुनिटी मिल गई अपनी बात कहने के लिए कि ही रियली लव्स नोरा, ही इज इन लव विद हर एंड शी शुड ट्रस्ट हिम। तो जैसे ही डॉक्टर रैंक ने ऐसा कहा कि उसको उसमें ट्रस्ट करना चाहिए और वो उससे बहुत प्रेम करता है, और जिस तरह से हेल्मर उसके लिए न्योछावर कर सकता है अपना जीवन, उसी तरह से वो भी अपना जीवन उसके लिए न्योछावर कर सकता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इतना सुनने के बाद में नोरा जो है कि नोरा अपना प्लान चेंज कर लेती है टू गेट मनी फ्रॉम रैंक टू पे क्रॉग स्टेट। तो यहाँ पे जो मदद नोरा जो चाह रही थी वो हमें ये समझना पड़ेगा कि नोरा इनफैक्ट जो है कि डॉक्टर रैंक से मनी की मदद चाह रही है। वो उससे पैसे उधार लेना चाहती है ताकि वो क्रॉग स्टेट को पे कर सके और क्रॉग स्टेट का चैप्टर क्लोज हो जाए, फिर क्रॉग स्टेट कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब जब उसने ये डॉक्टर रैंक के जो वर्ड्स सुने लव के, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई और उसने कहा कि उसको ही मस्ट नॉट हैव सेड सो, ऐसे शब्द उसको नहीं कहने चाहिए थे और ये उसके लिए बहुत खतरनाक है ऐसे शब्द उससे सुनना, क्योंकि आफ्टर ऑल शी इज वाइफ ऑफ हेल्मर, टोवर्ड हेल्मर। तो वो ये भी कहती है जब वो डॉक्टर रैंक ये कन्फेस कर लेता है उसका लव उसके प्रति, तो कहती है कि नाउ शी वॉन्ट से टेल हिम, शी वॉन्ट आस्क एनी हेल्प फ्रॉम हिम, शी इज नॉट इन पोजिशन टू टेल हिम वॉट शी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। अर्थात वो उससे क्या मदद लेना चाहती थी वो उसको नहीं बताएगी, क्योंकि ये अब नाउ द सर्कमस्टांसेस हैव बीन चेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि नोरा वॉज हर्ट बाय द वर्ड्स दैट वर स्पोकन डॉक्टर रैंक, बाय द रैंक। शी डिडंट लाइक दोज वर्ड्स, although they both of them were very close to each other, they developed an intimacy between them. Even then, when Dr. Rank approached more towards Nora, Nora didn't like that. नोरा को पसंद नहीं था, तो इसलिए उन शब्दों से वो नाराज हो गई और उसने कहा कि अब वो उससे कोई मदद मांगने नहीं जा रही है, उसको उससे कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। और वो रैंक को ये भी कहती है कि वो कोई बात नहीं, वो रोज़ उनके घर आ सकता है, नो प्रॉब्लम, और वो पहले की तरह आता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे वही रिस्पेक्ट मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो प्रेफरेंस जो है डॉक्टर रैंक जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हेल्मर के ऊपर जा कर के उसको प्रेफरेंस मिले, दैट विल नॉट देयर, दैट इज शी फील्स नो प्रेफरेंस एट ऑल फॉर डॉक्टर रैंक्स कंपनी नाउ, ऑल्दो आए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्टोरी आगे बढ़ रही है। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर रैंक नोरा से की तरफ जो है कि खिंच रहा है। इसके बाद में नोराज लव फॉर टॉरवर्ल्ड एंड हर डिजायर फॉर रैंक्स कंपनी, नोरा जो है कि टॉरवर्ल्ड को भी अपना प्रेम एक्सप्रेस कर रही है और उसकी डिजायर ये भी है कि डॉक्टर रैंक भी उनके घर बराबर आता रहे और उसको कंपनी देता रहे, क्योंकि वो इतने घुल मिल गए कि शी ऑल्सो कैनॉट लिव विदाउट द कंपनी ऑफ डॉक्टर रैंक।
और हम ये भी जानते हैं कि नोरा हैज शेयर्ड एवरीथिंग with Dr. Rang. The things which she did not share with her own husband Torvald Helmer, she shared with Dr. Rang. क्योंकि हेल्मर को तो कई चीज़ें पसंद नहीं थी, इसलिए वो नोरा उससे सारी बातें नहीं करती थी, और जबकि वो डॉक्टर रैंक से सब चीज़ें करती। अब वहाँ पे एक विजिटर जो आता है नोरा से मिलने के लिए आता है, और नोरा जो है कि ये सब जो है कि फैक्ट्स जो है वो रैंक से, डॉक्टर रैंक से छुपा रही है। अब वहाँ विजिटर कौन आता है ये अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, वी विल मीट you very soon with the new lecture.